Hey guys, this is Pallavi and I have been invited to the biggest wedding celebration by Swiss Beauty क्योंकि BFF के बिना wedding कैसा? And today I'll be doing a very easy Indian wedding look that you can do on your own and carry it with a grace. And the most important thing about today's tutorial is that I will be using few celebrity makeup hacks that went viral in 2023 जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं. And I'll be using all the products from Swiss Beauty and this beautiful kit as well. इसमें क्या क्या है? Let me tell you. And we have this eyeshadow palette. उसके बाद है makeup fixer, much needed. And this real makeup base. And we have this liquid blush. I'll be showing you all these products individually. So this was about the kit. Now let's move on to the tutorial. So let's do the base first. Base के लिए मैं 3 products use करूँगी. पहले मैं ये use करूँगी liquid highlighter and then a little bit of foundation और अपना favorite moisturizer. ये जो मिक्सिंग कॉम्बिनेशन है आलिया भट्ट यूज करती है इन हर डेली रूटीन, सो वही मैं आज फॉलो करने वाली हूँ. शी यूज स्किन टेंट्स, मेरे पास स्किन टेंट नहीं है, सो आई विल बी यूजिंग दिस फाउंडेशन इन अ वेरी लिटिल क्वांटिटी सो इट विल वर्क सेम वे. सो आई विल मिक्स दीज 3 प्रोडक्ट्स and I will apply it using my hands as Alia Bhatt did. I'm little nervous because I never used foundation using my hands. It is actually giving a very natural look. Okay, so इसने बहुत अच्छी फिनिश दी है मुझे and I'm gonna use this hack in my daily life. Now base तो बहुत अच्छे से बन गया है. Next step I'm doing is concealing and concealer के लिए मैं ये concealer use कर रही हूँ. I just love the coverage of this concealer और मैं उसको थोड़े से lifted way में लगाऊंगी ताकि मेरा जो face है वो chiseled और lifted लगे. बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है, बहुत थोड़ा सा लगाना है जितना भी रिक्वायर्ड हो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बॉडी मेकअप नहीं कर रहे हैं, नेचुरल ही रख रहे हैं. Now after concealing, I'll be using this blush and इसके लिए भी आलिया भट्ट का हैक यूज़ कर रही हूँ. उसने क्या किया था, इस ब्लश को ऐसा सी में लगाया था और थोड़ा सा नोज पे भी लिया था. Like she just created the C here and W here. So यहाँ पर I have created a C on both sides. Then created a W, taking it from the nose. Like this. You can use your finger as well. I prefer brush. I'm just loving the shade of this blush and it's easily blendable. Just loving it. See how beautifully flushed look it has given me. Amazing. My brief to every makeup artist is मुझे highlighter में डुबा दो. So for the next step, I'll be using this liquid highlighter and मैं इसको apply करूँगी जानवी कपूर के तरीके से. Like when she said कि मुझे highlighter में डुबा दो, I instantly related to her. I also like a lot of highlighter and I like to glow from every angle. So I'm going to be applying this on all high points of my face. Can you see that glow? I'm obsessed with it. Now my base is done and I'll be using this makeup fixer to set the base. Always remember to keep this far from face when you're setting the makeup.
अब मैं करूंगी अपनी आईब्रोज यूजिंग द हैक फ्रॉम प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी आईब्रोज खुद करती है और किस तरह से करती है, I'll tell you. So all you need to do is just lift your eyebrows like this and fill in. And then just fill the gaps. Same with the other brows. And fill in. Now I'm gonna start with the eye makeup and बहुत ही सिंपल सा आई मेकअप कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर शिमर शैडो यूज कर रही हूँ। दिस वन इज अ बिट लाइक माई आउटफिट। सो मैंने ये फिंगर से लिया है एंड पूरी आईलिड पे अप्लाई किया है। ऑलवेज यूज योर फिंगर टू अप्लाई शिमर शैडो, क्योंकि ब्रश से इतना अच्छा पिगमेंट नहीं आता है जितना फिंगर से आता है। आई ऑलवेज यूज फिंगर फॉर माई ब्राइड्स इवन। सेम ऑन द अदर साइड एज वेल। उसके बाद I'm taking this pink shadow here to apply it on my crease line. And एक fluffy brush यूज किया है मैंने and बहुत ही हल्के हाथों से crease line में अप्लाई किया है, just to create a depth. यहाँ पर if you feel कि shimmer shadow wipe off हो गया है तो you can apply it again. नाउ लोअर लैश लाइन के लिए मैं यहाँ पर ये लाइट ब्राउन शैडो यूज कर रही हूँ, बस सिंगल शैडो यूज करूंगी। दिस आई शैडो पैलेट इज सो पिगमेंटेड। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। And lastly for the eye makeup, I'm gonna highlight the tear duct corner using this shimmer shade. It's a very light shimmer shade in the pinkish tone. अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा यूजिंग द टेक्निक और हैक यू कैन कॉल इट फ्रॉम सेलेना गोमेज। इट्स एक्चुअली एन हैक फॉर लोअर लैशेस। सो ऊपर तो हम जैसे यूजुअली लगाते हैं वैसे ही लगा रही हूँ। नाउ कम टू द एक्चुअल हैक। फॉर दिस हैक ऑल यू हैव टू डू इज टेक अ ट्वीजर एंड अ मस्कारा वॉन्ड एंड ट्वीजर पे हल्का सा मस्कारा लिया एंड धीरे से अपनी लोअर लैशेस पर अप्लाई किया। डोंट होल्ड इट टू टाइटली, अदरवाइज आपकी जो लैशेस है वो बाहर आ जाएंगी, क्योंकि हम ट्वीजर से कर रहे हैं। It actually enhances the look of my lower lashes. I don't know if the results are visible on camera, but it is actually effective. Moving on to the last step of the makeup, that is lipstick. Now उसके लिए भी मैं आलिया भट्ट का हैक यूज कर रही हूँ। So what she does is वो लिपस्टिक लगाने के लिए अपनी लिपस्टिक को नहीं मूव करती है, लिप्स को मूव करती है। इससे थोड़ा सा नेचुरल लुक आता है और बहुत ज्यादा केकी नहीं होता है। Let's try it out. I'm looking a little funny, I know that, but this is what the hack is. I don't know if it made any difference, but yeah, it worked. This is the whole makeup. Now let me just complete it with the jewelry and bindi. So this is the look I created using the Swiss Beauty products, and I'm loving the finish it gave me. Swiss Beauty have a lot of amazing products on the website, so do visit their website and I'm sure you'll find everything you'll ever need for your makeup. And also they have some beautiful gifting kits as well for your loved ones, so make sure to check out that as well. Even if you're a bride or a bridesmaid, Swiss Beauty have got something for everyone. So this was it for today. मिलते हैं next video में. Till then, see ya.